positive. Follow your heart. अब 1920 के बाद फिर से एक ऐसा हेल्थ क्राइसिस आया है विच हैज़ अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड. सो इंडिया इज़ नॉट अनअफेक्टेड फ्रॉम दैट एंड इट हैज़ अफेक्टेड द इंडस्ट्री. And be it any industry, be it automobile, be it real estate, be it retail market, all the industries have been affected. And I think all the industries are now coping up and finding out new ways to do business in this new normal. April was the first month in the history of Indian automobile that there was zero retail or wholesale of any brand. And all have suffered huge losses, be it manufacturer or the dealerships. But there has been a V-shaped recovery. The recovery has been very fast and no one has anticipated that the recovery of the market would be so fast. Everyone is very positive about the demand in festival season because we are seeing increased inquiries from the customers. Though customers are avoiding walk-ins in the showroom, but there has been increased in telephonic inquiries that we received in dealership. So we are very, very optimistic for the upcoming future, for the upcoming festival season in the automobile demand. And the main reason is again the rise because everyone wants to have their own vehicle to avoid public transport. So that is, I think, the main reason driving growth towards automobile. AI is the future, and I don't think any of the manufacturer has stopped work towards AI or the electric vehicles because everyone knows that that will be the future. So all the automobile brands are working towards it, and once the infrastructure comes up to support that kind of vehicles, I think that vehicles would be coming from all the manufacturers. इसमें दो चीज़ों में बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है. एक, जैसे मैंने कहा कि लोअर मॉडल्स में की डिमांड बढ़ी है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. एंड नंबर टू, गवर्नमेंट आर सपोर्टिंग फाइनेंस कंपनी टू एग्रेसिवली फाइनेंस. आप देखेंगे जो आत्मनिर्भर पैकेज भी आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने उसमें NBFCs को और फाइनेंस कंपनी को बहुत लिक्विडिटी दी है. तो वंस दैट लिक्विडिटी विच हैव बीन गिवन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्लोज इनटू द मार्केट, द डिमांड विल ऑटोमेटिकली राइज. आई थिंक अब उसमें गवर्नमेंट को देखना रहेगा कि कैसे वो NBFC के साथ जो उनको लिक्विडिटी दी है, हाउ दैट लिक्विडिटी इज पास्ड ऑन टू द रियल कंज्यूमर. दैट इज द टास्क, एंड वन दैट हैपेंस, द डिमांड विल ऑटोमेटिकली राइज अप. See positive. Follow your heart. चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें.